We're live, and it's breaking news time. Welcome everyone to MUSC Red Devils NCR, and it is indeed breaking news time. News on Mason Greenwood. Star boy is back. Is he not? Who knows? Who knows? Well, we do have at least a hint from the club. The club have finally spoken up. There was a lot of talk. बहुत बकवास चल रही थी इधर से उधर से उधर से इधर से किसी एसोसिएशन की स्टेटमेंट फिर किसी एसोसिएशन की स्टेटमेंट ये है ये है who knew what was going to happen but we now have a ठोस क्लू ठोस एक हमारे पास मुद्दा दावा आ चुका है कि he might not be back. We'll delve into that. That's why we're live. Hope you all are doing well, and it's, I don't know, some people are excited, some are, and I'm sure you must have heard about what the news has really come out, and it's just mammoth chaos. And because we remember the potential of the player, we remember what the player was. I think it was, if I'm correct, it was 30th January or October. I don't remember. 30th January tha shayad, 31st January, something like that. Of it's been डेढ़ साल now since he has been out of action, and that is going to be the main thing now because what has come out. See, obviously, when we all saw that notification pop up, ki bhai sahab, update on Mason Greenwood, we were like, it's either going to be woohoo, which most of us expected, or it's going to be oh shit. So, but it has been somewhere in the middle. But again, as we said, it might be edging towards finally, as Manish Bhai says, finally. So it might be edging towards a conclusion, as they say. But let's see, man. Let's see. So the exact words, to be precise, I'm not going to read out the full thing, but they're saying, following the dropping of all the charges, blah blah blah. The drama has had evidence and it's in the public domain. हम नहीं करना चाहते and blah blah blah. Throughout the process, the welfare and the perspective of the alleged victim has been central. Okay, so they're basically doing the formalities in the first half. Then they say कि उनकी responsibility towards Mason Greenwood भी है, as a player, as an employee, and also as a new father with उसके partner, which is obviously the main person who accused Greenwood in the first place. It's दिमाग खोल देने वाला केस है, to be honest, first of all. So basically, अब उन्होंने कहा कि the fact finding phase of our investigation is now complete, and we are in the final stages of making a decision on Mason Greenwood. So that's that. Great news, says Prakash bhai. Great news. I would say great news. I would say news in the right direction. News that is pointing towards the great direction, I'd say. So contrary, they're obviously denying all the charges of, a decision being already made. Of course, they're going to do that. So we need a player like him, a proper finisher. We're going to come to that. Ki proper finisher to wo hai, but Greenwood, 1.5 saal pehle ka Greenwood was a proper finisher. But the kind of ability he's got, the kind of praise Solskjaer, heaps and bounds ka praise jo se Solskjaer se mila. Malab, the best finisher I've ever seen. Rooney, Van Nistelrooy, Ronaldo, nahi, Mason Greenwood is the best that Solskjaer saw at the club, while his managerial as well as the player reign. So that is, but wo 1.5 saal pehle ka Greenwood hai. Is he still the same? Is he not? Only time will tell, and we might tell you as well. But no. So yeah, and then they ended by saying it's been a difficult case for everyone, including Greenwood and stuff. And we ask for patience in the final stages. So in the final stages, is this? Matlab, it's been a ride, man. Matlab, club, I think, did extremely well. First time I'd say I am like I'm like मैं अपना सर झुका के बोलता हूँ कि क्लब ने मेरे हिसाब से maybe I think people are overrating because हमें आदत हो गई है hate करने की यूनाइटेड की मैनेजमेंट को. I think for the first time the club has done this well. I am the first one to say so. मेरे हिसाब से because you know what, when this happened, Greenwood, he was golden boy of United, golden boy of potentially England. He was already in a couple of cases with Phil Foden. Phil Foden got the चांटे बजा दिए Guardiola ने और बोला चल भाई तू शांत रह जा. And he has maybe at least in the public life improved on his his behavior as a public icon, as a public figure. But Greenwood sadly couldn't, and whatever unfolded we all know. But I think जिस तरीके से उसको उसी वक्त दबा दिया in the sense whatever had to happen would have happened nonetheless and has happened. But they took actions. They did not go overboard just in the hype. No, हम तो कर देंगे. Like maybe City was the example for them. Because see, Greenwood, what the potential. Let's be honest, he's only here because of the potential. Otherwise, a club as big as United
they would have sacked any other player for sure. Let's McTominay के ऊपर ही होता. Do you really think he would have had any iota होता है negative में लगा लो तुम, because maths नहीं आता रही, but हाँ iota of proof, मतलब iota of chance होता McTominay जैसे प्लेयर के पास नहीं. But City, to be honest, not being such a media hyped club, उनका Benjamin Mendy जैसा player was also in the circuit. He wasn't properly taken out of the team. उसका contract अब खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया. Now he's back in football with Lorient. So we didn't go overboard कि just because it has come out हमने हटा दिया, ये कर दिया. Obviously the backlash started on him. Cancel culture being on its peak, and of course जिस तरीके के उस वक्त news and reports आई थी, it was the least that was expected. Nike dropping him, उसकी सारी sponsorships etc. Manchester United का still वो employee था. Manchester United में वो quote unquote अभी भी काम करता था. And his contract wasn't उसका contract नहीं टूटा, उसका contract नहीं suspend हुआ. He was still in the team and stuff. Obviously FIFA ने हटा दिया, वही as I said, sponsorships got dropped and stuff, but he was still there. And then they kept their mouth shut. There were not many leaks. Obviously there were reports here and there. Reporters का तो यही काम है United को लेकर के, they're going to talk. And there were leaks here and there. ये होने वाला है, आज कोर्ट में ये हुआ, वो सब. But the club held its feet right on the ground, which was very surprising for me to see. And now then जब थोड़ा time होने लगा, they धीरे करके they released छोटी चीजें. How do you think we're going to come to that, Manish bhai? We're certainly going to come to that, because it's going to be a big, because हमें मतलब, to be honest, even we as fans would have turned on a player अगर वो Greenwood के stature का नहीं होता. Let's be honest. Obviously some of us did, and it's not about turning on him. It's actually about what do you think is right and what do you think is wrong. But I'm saying अगर कोई भी player एक बेचारा एक medium level का player होता तो हम right wrong तो कभी देखते ही नहीं. I think our first would have been हटाओ साले को, हटाओ this and that and stuff like that, because of the fact that he has got such immense potential to be one of the greats of this club, as many have already suggested. We gave him second chances, we gave him second thoughts in our brain, and that is what is probably going to lead him back into the team. But yeah, as I was saying, and now when it was time to actually for him to maybe take a decision on him, the club again were fine. I think they were fine. I have no complaints with the club right here, right now, because धीरे करके थोड़ी reports आने लगी. It was paid PR or something, everyone was saying, and I do believe some of it was certainly paid PR. उसका धीरे maybe Greenwood को बोला गया, because I saw the post recently. I knew he had posted about his baby, but I saw the post recently and I figured out कि जब उसने post किया and जो baby का birthday है, they are I guess 5, 10, 15, 20 दिन दूर. So I think there would have been a discussion within the club, because he wasn't active on Instagram at all. Neither was uski partner. So but they unne combined post dala. So I'm sure they would have had a long talk with the lawyers, with the the decision making community for them, with the club ke legal team and stuff. I think this is the best, because two things. I'll go here with two things that have absolutely played in the favor. So before we jump to the conclusion, I think these are the two things. One, Benjamin Mendy, because this was a player of the same ilk of case जो उसके ऊपर चल रहा था. It is what it is. We really can't change anything, says Kushagra bhai. Exactly. We can't really change anything. But that is what I was saying. कि दो चीजें. So one, the Benjamin Mendy case, which was like an ever prolonged case, and that were some serious allegations in terms of numbers and the nature of crime. Obviously, this was as well, and I mean, come on. But उसका जो sheer number, एक के बाद एक साथ तीन case, चार case, we lost track of the cases. But systematically, all of them got proven, and it wasn't even कि जैसे इसके में हो गया lack of evidence या जो भी वो थे witnesses वगैरह उनका नहीं अपना, उसका systematically या तो उनने पार्टी ने वापस ले लिया केस, या फिर they actually got proven not guilty for Benjamin Mendy. So that uska timing really played in the favor of what is happening right now. And number two is the announcement or the agreement or the settlement, and I don't mean it in legal terms, I mean it in real life, couple wala terms, whatever they reached to. Did Greenwood and uski girlfriend, I suppose, I don't think they're married at all. I don't think so. Yeah. So उनका जो relationship था, that got sorted somehow. भगवान जाने कैसे, by the way.
of what had happened. I don't even know what's happening with the case anymore because apparently the charges have been dropped. ये हो गया, वो हो गया. But now the person जिसने charges file किए थे वही is in a relationship with the person who she had filed the case against. So what is the base of the case? I don't know. If someone can educate me, they're welcome in the chat. So yeah, I don't have any particular matlab, grassroots level knowledge about that. Maybe a lawyer in the chat can guide us better. But as I was saying, उतना मुझे समझ नहीं आ पाया उस sense में. But what I did understand was that really played in the favor of what we think is going to happen now, which is probably Greenwood is going to be back. And yes, I've said it. And of course, I think you all expect that as well. That Greenwood आएगा. It's a step in the right direction. And I think club को अगर no ही बोलना था, they wouldn't have gone on and had this statement anyways. So as I was saying, so them coming back together, they're having a discussion. Then they had a baby, and now they've announced it and stuff. So these two things, because Benjamin Mendy is now going to pursue his career. I haven't really seen much about him. Let me check what's up with Benjamin Mendy. Like, has he been back in training and stuff? So yeah, let me check that. But apart from that, him coming back into the footballing world, and of course, United not burning a bridge with him, and then this baby wala news, this relationship wala news. So of course, that has really helped us. So now, in terms of what is the future for him now? Now, the future for him, Athletic ka, obviously the club have gone on and denied it, ki nahi hua, kuch pura nahi hua, this and that. But according to Athletic, which is, of course, as the football community knows, a very, 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 very trustable source of information. And when they say something, especially the Ornsteins and the Whitwells of this world, we as United fans listen. Carl Anka as well, obviously. Carl Anka bhi ek kafi potent United fan. But the United fan is either, so him as well. So them three say something, we do listen absolutely every time. Samuel Okersby, but I'm not sure about Athletic man. But anyways, Athletic, David Ornstein, I believe it was, who said, जिसका quote आया at least, कि Richard Arnold ने probably 2 हफ्ते पहले बोल दिया था, club में announce कर दिया था कि he's going to be back. He is going to be back, and that is the news which is coming out there. And of course, as I said, the club have gone on and denied it, and of course, as they should, they've handled it, as I said, perfectly, and they should keep doing that. They should deny everything. At the moment वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते, they should absolutely deny it. And well, look, people would have second views. आप लोग मुझे chat में बताओ. I don't know, poll अगर मुझे करनी आती होती मैं कर देता. But you guys let me know in the chat. What do you think? Are you for or against him coming back? I don't know. Do you guys think it's right for him to be back? Or do you guys think, nah, well, I don't know whether he should be back or not. I'm not really sure about that. Because I, for one, think, man, matlab, ab ho gaya. Like, he got his woe and everything was happening and stuff. But, like, what's there to see now? Like, what do you think is there left to see? Because they are in a relationship. The person, as I said, जिसने complaint दर्ज की थी, जिससे पूरा मुद्दा start हुआ, her and the person involved are in absolute perfect terms, as it seems. They have a baby now. They are, they are there. They're the parents, and they are back together. And the charges. I technicality में मुझे excuse कर देना if I'm wrong anywhere, but witness की वजह से, with lack of evidence witness की वजह से ये case रुक गया है, शायद वो नहीं मिल पा रहे witness वगैरह वो सब. So that has happened. So I don't see what is stopping him from coming back. And as I said, people might have opinions कि वो ऐसा होता तो उसको वापस नहीं देते. As I even myself said, वो McTominay type होता, Maguire type होता, हम तो कहते ले जाओ, बिना कुछ करे ले जाओ. Greece incident अगर ऐसा होता. ABY says Starboy is back. Starboy is back. Bye, Sab. Yes, as we all predicted, and of course, इसके बाद it's like the final nail in the coffin is remaining. I'd say is still remaining. ये case इतना delicate है कि मैं अभी भी बोलूंगा कि final इतना सा nail in the coffin is still remaining. उसके अलावा I think उन्हें अगर no बोलना ही था, they would have just gone on and said it, because they wouldn't have really waited and they wouldn't have said कि हम बताएंगे, हम बस एक हफ्ते में बताते हैं आपको. वो सीधा आते कहते इतनी देर के बाद keeping the clubs का club का ethos, values, traditions, and ये वो Greenwood हमारा वो है. I hope he learns from his mistakes and ये वो. But अब वो इसको दूसरा spin देंगे. He has learned from his mistakes. He's a young United में 7 साल से. He has the club's values. He has the club support.
and we all know what he can achieve, not only in his professional life but in his personal life, not only as a footballer but also as a man, as a person, as this, as that. And he has grown, he has shown immense woe, and he has shown that he's willing to be back, not just with the team but as a person, as a man. Karke he'll be back, and absolutely Starboy will be back. One goal which I've थ्री गोल्स आई जस्ट सेड वन गोल एंड मुझे तीन गोल याद है कि दो अगेंस्ट बॉर्नमथ, एक जो वो लेफ्ट लेफ्ट पे था और बूम लेफ्ट से पेल ली थी, एंड अगेन अगेंस्ट बॉर्नमथ जो राइट फुट से उसने बूम करके एरन रैम्सडेल के एकदम ऊपर से पेल दी थी. एंड द वन गोल, सच एन अंडररेटेड गोल, थ्रू बॉल पॉगबा की थी, गोल यहाँ था, वो यहाँ था, and he just shot from there and he beat the keeper. Fucking hell, against RB Leipzig in the first fucking leg, I think it was, yeah. And I think we won that 1-0 or 2-0, I don't remember properly, but कुछ था. And भैंस की आंख, कायो उपमकानो था शायद तब उनके पास, या इब्राहिम कोनाटे, उसको धक्का देते हुए, उसको होल्ड ऑफ करते हुए, he shot it and he scored. What a finish that was. So I remember that from Mason Greenwood, and it's just, the potential is huge. एक वीडियो आई थी बीच में जहां पे वो बहुत ऑफ लग रहा था, बट दैट्स बाउंड टू हैपन. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वन. See, of course, we are jumping the gun here, and of course, we as fans should. Yeah, 1.5 साल हो गया, but if we are allowed to jump the gun, hopefully, supposedly, he's back. How will that happen? First of all, कब इसकी announcement होगी कि वो वापस आएगा, and after that, उसकी announcement होगी. So, what will be the immediate next step, which is going to sort of be taken? So, we don't know about that. Would it be he would be integrated with the reserves, the under 21s and stuff? Or would he train alone under 20 months, फिर train alone and then get to match fitness and then 3-4-5 महीने में या 2-3 महीने में? Or would it be like कि he'd go out on loan or stuff, या कुछ उसके लिए special exemption कर दे कि वो अभी लोन पे जा सके? Maybe उन्होंने अभी इसलिए बोला है कि clubs would be willing to take him on loan अभी, yeah, something like that. But it's going to be a really interesting thing to see, because I guess 1.5-2 हफ्ते ही बचे हैं ट्रांसफर विंडो में, and if I'm not wrong 1.5 हफ्ता ही बचा है शायद, या 1 महीने तक होती है. I don't know, correct me or let me know in the comments. Does the transfer window open for the next 9-10 days, or is it open for another 20-25 days? I don't remember properly. So that's that. But yeah, anyways, I think agar 9-10 दिन भी है, if we do get to a conclusion, a proper decision in the next 4-5 days, it may happen कि वो he ends up on loan at a club, which I think is a bit unlikely, but as I said, anything's possible इस वाले केस में. और second में भी ये होगा कि भाई squad integration, and then January तक होगा, and then maybe he could go out on loan in January. Kushagra says 2 weeks more. Right. 2 weeks more. This was everybody saying the star boy is back, and we are all fucking pumped up about it, aren't we? But yeah, 2 weeks more. Right. So 2 weeks more is the verdict by Kushagra bhai. So yeah, again, it seems a bit unlikely. It does. It seems a bit unlikely that 2 हफ्ते से पहले at least 5-6 दिन तो होंगे. So 1.5-2 हफ्ते जो है उसमें से 5-6 दिन तो रखने होंगे if he wants to go out on loan, if he eventually will go out on loan. So that means the final decision would come in the next 3-4 days, which let's see. And again, it's the Wednesday. It's the Wednesday curse, and I mean it in a positive way. Wednesday boon bane, whatever you call it, but yeah, it's a positive for us. Wednesday कोई चीज होती है भाई United पे. I think it's their day. It's their day of calling and stuff. So that's that. But very pretty pumped up. It just came out of nowhere. To be honest, we were thinking of covering it about the Maguire issue, and there was an irritating-ish news about Maguire, and apparently the deal is off, and he's having a ton of backlash from our fans, with some of which I don't agree to the extent people are going, but the fundamentals of which I absolutely agree, which is for himself, for the love of the club and stuff, he should be looking to leave. And it was a clear and proper message yesterday that he isn't even the third choice centre back. He's really the fourth choice centre back. Are Mo Salah ki DP wale bhai is back. Greenwood training with his father, and he are so bad. I think you mean that he's so bad and he's training with his father and he doesn't look up to speed. I think you're referring to that video alone, and I think maybe it could be taken it could have been taken out of context, because sometimes when you're maybe मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही चीज आई थी, आपका सेशन खत्म होता है, आप ऐसे सोचते हो 4-5 है lose करके उड़ा दूं. I think that could be the case, because I didn't think he was in full flow of hitting the ball he usually hits, and it's not about the result, it's about the flow in which he hits the ball. It may actually be you I saw, but I don't think. See,
what we have to really know is कि ये जो भी डिसीजन है, ये जो भी डिसीजन है जो यूनाइटेड ने बना लिया है, we know now कि बना लिया है, this has been made, not made right now. This has been in talks for at least 4 5 months, and the decision has been made. Like only the dotting the T's and crossing the I's, yeah, crossing the T's, dotting the I's जो भी रहता है वो पिछले 2 3 महीने से हो रही है. बट द डिसीजन वुड बी लॉक्ड वाला लॉक्ड. अगर जब तक कुछ बवंडर नहीं बचता, इट वाजंट बाउंड टू चेंज. सो कंसिडर कि वो 100 इश दिन हो गए हैं उसको ये डिसीजन करे हुए, एंड उससे पहले 5 6 महीने से दिस वुड हैव बीन इन टॉक्स कि हाँ मोस्ट प्रोबब्ली यही करने वाले हैं. सो आई डोंट बिलीव, and with him still being an employee of the club didn't suspend. I don't believe for 1 second that he wasn't, at any point of time, was he in a stupendously bad shape. I don't believe so. I think at least, मेरे हिसाब से तो पिछले 1 सवा साल से ही पूरे ही कर रहा होगा, but at least because he knew what was at stake. He absolutely knew what was at stake. So I think at least for the past 6 7 8 months he would have been training, and of course obviously पिछले 4 5 महीने से तो बहुत तेजी से, with full force. Was a possibility that Mason would go to Galatasaray, but a short while ago Galatasaray signed Ziyech from Chelsea. See, Ziyech sign किया हो Mason, मैं वही सोचा Mount क्यों जाएगा Galatasaray, and then I remembered we have Mason would be back now. But no, as I was saying, भाई Ziyech जाए Galatasaray, Ziyech जाए, तुम्हारा Loftus-Cheek जाए, Pulisic जाए, no one would care if they get a chance to sign Greenwood, and if they see, obviously the club, if they sign a Greenwood on loan, they would also see, he'd be back, and वो किस shape में होगा. Obviously, no one is going to take him ऐसे ही. So yeah, James Mbabazi says we miss our Messiah. Yeah, Messi. I would say him lefty, righty, whatever you'd call him. What a player on his day. On his day, he like previously called our star boy. अब तो गर्नाचो को बोलने लगे हैं, एंड मुझे डर लगता है कभी कभी कि गर्नाचो भाई तुम भी ना चले जाना इस तरीके से. बट नो, या, and it's all positive. But yeah, just touching on that, what I was touching before that, it was an irritating sort of news when we heard that Harry Maguire would possibly, just not like to move, and apparently he's committed to the club. And to some, as I said, to some degree, I agree with that in the sense कि यार उसे 6 महीना ही हुआ है अभी drop हुए. Don't forget, till like 2 ish months ago, he was like our captain as well. So that also adds to the whole sentiment of whether it's actually time for him to just leave the club all of a sudden. Maybe he wants to be in that England squad and not just leave the club. And I have Ojas Bhai with me. Ojas Bhai, how are you doing? मैं बढ़िया, आप बताओ. बढ़िया. No, I'd ask you, आप 8 बजे से पहले कैसा कर रहे थे और 8 बजे के बाद how are you doing? नहीं, सरप्राइजिंग न्यूज है, बट प्रिडिक्टेबल था बोर्ड की तरफ से. एक एसेट डेवलप जब आप करते हो यूथ एकेडमी में एंड यू ब्रिंग हिम थ्रू द रैंक्स, you need that sort of player to play for Manchester United at least for a majority of his career. तो स्टार्टिंग से ही बैक कर रहे थे उसको. ग्रीनवुड को मैंने यही देखा है. ओवरऑल कभी भी ऐसा नहीं लगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से कि इनका ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा. उस साइड तो बात गई नहीं. जो बात थी कि वी आर स्टिल वर्किंग एंड वी हैव वर्कड अप टू दिस कंक्लूजन कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज सपोर्टिंग हिम टू कम बैक irrespective of what anyone else thinks around the globe. Mason Greenwood is a proper asset for Manchester United, and in any way वो उसको जाने नहीं देते. Absolutely. as I was saying कि it'll be foolish of us to think कि ये news अभी आई है तो decision अभी बना है. The decision would at least have been in talks for the past 4 5 months, and the signed, sealed and delivered wala thing would have at least happened 2 3 months ago, and they were just waiting कि सब थमे. As I said earlier in the stream कि जो Mendy का case हुआ, and Mendy coming back to football, I think that has really given this a push. And then unka baby, the announcement, because as I was also saying कि जो announcement है and जो date of birth है baby का, they are like 10 15 20 days apart. So maybe they would have considered and talked with everyone कि हमें कर लेना चाहिए, because both of them weren't active on social media. So them coming back together, announcing and stuff. So ये दो I think have been in the books. And I mean, what, like जब आपने वो पढ़ा कि update on Greenwood, did you think it was going to be a decision, yes or no, या फिर आपको लगा ये stall वाला scene होगा?
नहीं, मेरे को बहुत पहले, एक हफ्ता पहले मैंने आर्टिकल पढ़ लिया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी क्लोज टू डिसाइडिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ ग्रीनवुड। तो Yeah. मेरे को इतना पता है कि इस मंथ में होना है, कुछ ना कुछ जरूर होना है। सो व्हेन आई गॉट एन अपडेट लाइक दिस आउट ऑफ, आई थिंक लास्ट टाइम जब हमें ग्रीनवुड का अपडेट मिला था तो वो कुछ महीनों पहले ही था। Yeah. तो इस बीच तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिशियल ऐप में ग्रीनवुड के ऊपर तो कोई अपडेट नहीं था शायद, सिवाय दैट दे नहीं आर नहीं pursuing नहीं. the investigations involved with the player that was charged with the abusive conduct towards his partner। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने पढ़ी थी बीच में, बट आई थिंक द ग्रीनवुड का मेंशन एक स्टार्ट में हुआ था जब ये इंसिडेंट हुआ। एंड अब जो मेंशन हुआ उसका न्यूज में टैगलाइन में, तो मैंने कहीं देखा, मेरे को कहीं ना कहीं था कि कंक्लूसिवनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और Hmm. यूनाइटेड डिसाइड कर चुका है क्या करना है। इट्स जस्ट Yeah. अबाउट जस्ट बीइंग एट द फाइनल स्टेज ऑफ इट। Yeah. पर इट्स लाइक मेरे को अभी भी श्योर नहीं है कि हाउ दे आर गोइंग टू प्लान इट आउट, क्योंकि Yeah. ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा Yeah. सेंसेशन बन सकता है, क्योंकि मेंडी का तो Absolutely. और वर्स्ट केस था। और यहाँ पे पार्टे का जो था, पार्टे वो जस्ट एस्केप्ड फ्रॉम प्रेजेंट हाँ टाइम आई सुलझ गेस। गया वो. It just gone. हाँ, It just went नहीं into thin नहीं, air. ओवर द इयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड या कोई भी क्लब हो, ये चीजें हुई है। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि ये हुई है तो होनी चाहिए, मैं इसको राइट कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि Yeah. इससे भी बड़े स्कैंडल्स हुए हैं This has और वो, happened. Yeah. हाँ वो, and they have just continued with their career, and one of them is one of the greatest players of all time. Ronaldo is Yeah. playing Yeah. football currently. So Yeah. आप स्टार्टिंग से देखो, सही और गलत तो आपका डिसीजन है। जैसे मेरे लिए गलत है ग्रीनवुड, मैं मानता हूँ, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड के लिए वो प्लेयर क्या है, उसका वो क्या चीज है, क्या रेपो है, क्या True. इम्पोर्टेंस है क्लब में, वो मैटर करता है। एंड ऑफ द डे हम कुछ भी कर ले, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट, हमारे लिए तो कभी Yeah. भी वो फेवर में नहीं रहेगा। पर Yeah. इट्स अल्टीमेटली द पीपल हु आर पेइंग द वेजेस, अल्टीमेटली Yeah. हु आर रनिंग द क्लब। Absolutely. You have to have that capitalistic point of view to this. मतलब आपको एक business उससे देखना ही पड़ेगा, you know, because it's about कि they're not fools, you know, they've been paying his wage bill पे रखा है, employee बना के रखा है, नाइकी उड़ गया, EA Sports जो भी है उनका FIFA उड़ा दिया, बाकी जो उसकी एथलीट ड्रिंक्स वगैरह वो सब उड़ा दिया, but that is because they have a company to run. But ये तो कंपनी का ही एसेट है, he himself is a company asset, and I think, you know, as we were discussing अभी, if you get into something like this, you better be a great footballer, because that is one of the only ways to. अगर आप वो नहीं हो तो भैया आप बहुत ट्रबल में. एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि मेंडी, यू नो, बिकॉज it's like City, you know, even like उनका कुछ नेगेटिव भी हो, even them winning the treble, for fuck's sake, लग रहा है अभी कि वो ट्रेबल जीते हैं, लग रहा है ऐसा कि फिर we've gone into a season and हम लोग Some चोट clubs will पहुंचे. never be important for football. Manchester City is Exactly. one of them. They will never be Exactly. important for football. That, और प्रीमियर लीग का नेचर नहीं है कि वन टीम लीग बने ये, तो नो वन इज रियली केयरिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी। आप जीतो, आपको जो करना है, आप पे रिसोर्सेज हैं वगैरह। बट मेंडी का सिचुएशन सिंपली ये था कि मेंडी पे फाइनेंसेस बहुत तगड़े थे। आई थिंक सो वो वर्ल्ड कप में 2018 के वर्ल्ड कप में उसने पार्टिसिपेट शायद नहीं किया था, शायद नहीं किया था। तो कहीं मेंडी ना मेंडी कहीं गाने में आता है ना, इसलिए मुझे याद है. हाँ, मेंडी के पॉलिटिकल टाइज थे, मेंडी के Okay. पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, और मेंडी के प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी, उसके पास ऐसे लॉयर्स थे जो इन सब, मतलब जो उस स्पेसिफिक तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये वो कैसे बच गया इतने काउंट ऑफ एक्यूजेशन से, वो भगवान ही जानता, क्योंकि Yeah. यहाँ पे इवन टोनी इज बैंड फॉर अनदर थिंग, टोटली अनदर थिंग। पर आप देखो कितना क्रूअल हो सकता है फुटबॉल, अगर उसमें से आप बच के निकल रहे हो इतने चीजों से, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल है। Oh, there is for sure. When you saying lawyers, एकदम से दिमाग सलमान भाई वाले लॉयर पकड़ रखे हैं इसने. And that's if you have money and if you have name, you will yeah, always come out of it, irrespective of whatever field you choose as a career. You have money, you have resources, you have connections, you will you have be out of you the have an legal advantage. trouble. Yeah, you आप have an कुछ नहीं कर advantage. Very obviously. ये देखो, मतलब इंसानों की फितरत देखो ओजस भाई. अभी आया नहीं ग्रीनवुड वापस, कह रहे हैं प्रॉब्लम देखो क्या है, एंटनी रैशफोर्ड, गर्नाचो, हॉयलैंड, ब्रूनो, माउंट,
एंड पेलिस्ट्री अब कहाँ खिलाएंगे विद ग्रीनवुड इंक्लूडेड। अरे दो भाई तो नंबर 8 है, दो तो नंबर 8 है इसमें से। आई थिंक वो गलत तरीके से पुट अप कर रहा है क्वेश्चन। वो कहना या चाह रहा है इतने अटैकिंग ऑप्शंस है, हम कहाँ खिलाएंगे। सी, या एक चीज आप जान लो, जब आप प्रीमियर लीग में खेल रहे हो प्लस यू आर प्लेइंग ऑन वेडनेसडे नाइट एंड ट्यूसडे नाइट इन चैंपियंस लीग, यू आर नेवर शॉर्ट ऑफ कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को प्लेयर्स की जरूरत नहीं। बिल्कुल। एक इंजरी सीजन खत्म कर सकती है टीम का, एक We have इंजरी seen बस। that, yeah. तो Yeah. इट्स समथिंग दैट प्रॉब्लम ऑफ वेनी इज अ गुड प्रॉब्लम। और Hmm. ग्रीनवुड जो मोस्ट प्रोबेबली आएगा मेरे ख्याल से, आई डोंट इवन नो कि वो इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि देयर इज अ मैंडेटरी क्लॉज इन हिज, मतलब ये जो चल रहा है इसमें, मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत बड़े टॉप जर्नलिस्ट ने बोला देयर आर काउंसलिंग पैरामीटर्स इन्वॉल्वड इन दिस। काउंसलिंग Okay. पैरामीटर्स में यू हैव टू अटेंड अ कंपलसरी काउंसलिंग हियरिंग, जिसमें आपको समझाया जाएगा, जैसे हमारे साथ होता है नॉर्मली। हम जब कुछ इनडिसिप्लिन करते हैं, देयर इज ऑलवेज काउंसलिंग ऑफ गाइडिंग अस दैट Yeah. व्हाट इज द राइट Before थिंग you टू get डू। back, yeah. There's a, it's like football way and mental way। अभी ग्रीनवुड को टाइम लगेगा, so really can't count him in options। but जब भी वो प्लेयर वापस आएगा, वो जैसे अभी गर्नाचो को हम देख रहे हैं ना, ये Any जिसने भी idea उसका गर्नाचो, कॉन्ट्रैक्ट कब तक है? उसका कॉन्ट्रैक्ट 1.5 साल का बचा। Okay. Okay. 1.5 साल का बचा उसका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप लगा लो 2 साल, आई एम सॉरी 2 साल का Okay. बचा। Okay. So तो ये पूरा और पूरा नेक्स्ट सीजन, राइट? हाँ, तो ये इट्स समथिंग जो गर्नाचो को भी एडमायर कर रहा है, जिसने ग्रीनवुड को देखा है। really special players in our hand, but as a human being we all are open to our own perspective। Yeah, absolutely. वही मैंने बोला कि some might agree, some might not, but at the end of the day, see, we're also open to say that even as fans and even as the biggest Greenwood fans, कि कोई मैकटोमिने, कोई मगवायर के कैलिबर का बंदा होता तो हम कहते उसने कुछ किया हो नहीं किया हो, तू निकल भाई, तू निकल. Even the club would have been like that. But Ole Gunnar Solskjaer, the coach at that time, saying while Ronaldo is in the team, याद नहीं आया था maybe जब भी, but he has played with him and Rooney के साथ, Nistelrooy, saying that Greenwood is the best ever finisher I've seen. And him scoring the goals we saw he did. Even Ole as a player saying that कि मैंने फिनिशर नहीं देखा, that is also Exactly. a very big comment to say, because मैंने तो ओले को कभी लाइव खेलते हुए नहीं देखा, बट जितना उसकी वीडियोस वगैरह देखी है मैंने, जितना बर्बाटॉफ और ओले, ये कुछ ऐसे फिनिशर्स थे जो मैंने, निस्टेलरॉय और रोनाल्डो और रूनी तो मतलब बहुत ही आगे है, वो अलग ही है। पर इन बहुत ही सीरियल फिनिशर था ओले गनर सोल्स्कायर। तो उसने अगर किसी को ये टर्म दिया कि ही हैज सीन अ वेरी गुड फिनिशर इन हिम, बिकॉज ट्रुथ बी टोल्ड, जिस तरीके से उसकी फिनिशिंग, ही वाज सेल्फिश, बट उसकी जो फिनिशिंग है स्पेशली इन दैट लॉकडाउन फेज, यू कैन नॉट मैच दैट विद एनी यंगस्टर। मतलब मैं गर्नाचो की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आई हैव अ पर्सनल लाइकिंग टुवर्ड्स गर्नाचो। मुझे उसमें वो एक स्टार प्लेयर दिखता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पागल कर देगा दुनिया को अपने स्किल से। Getting us, up from our seats वाला मतलब factor. हाँ, मतलब इट्स लाइक 88 मिनट ड्रॉ चल रहा है एंड गर्नाचो पे बॉल हो, स्टेडियम सडनली वाइब होने लगेगा। बट अगर कोई रियलिटी पे आएगा तो वो देखेगा गर्नाचो की फिनिशिंग अभी बहुत मीडियोकर है, अभी बहुत मीडियोकर है। और ग्रीनवुड ने उसी एज में फिनिशिंग पे कमांड किया था, तो दैट सेल्फ इज अ अचीवमेंट। तो आपने जिसने ग्रीनवुड को देखा है, चाहे वो राइट विंग खेल रहा हो, सीएफ खेल रहा हो, कहीं खेल रहा हो, फिनिशिंग उसकी टॉप नॉच है। अब आपका ये दिक्कत है कि आप ग्रीनवुड को इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो ग्रीनवुड को इंटीग्रेट करने की आपको इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एज सुन एज यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम्स यू इवेंचुअली गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर। तो सोल्स्कायर बोले, कोई भी बोले, वी ऑल नो, वी ऑल हैव सीन एज अ प्लेयर बहुत बढ़िया, बट अगेन सेम पॉइंट, एज अ पर्सनल थिंग आपका अपना पर्सपेक्टिव है। Absolutely. And I was just speaking of this previously as well कि now I don't know, 1-1.5-2 हफ्ते बचे हैं विंडो में, what's gonna happen, maybe अगर by any chance, जो मुझे लगता नहीं है, बहुत कम चांस लगता है कि अगर वो इसी विंडो में लोन पे जाए, so the final decision has to come 5-6 days before the window ends. So that means in 3-4 days from now on, maybe they get a clause even after the window ends, कुछ हो जाए, maybe some clubs outside Europe जिनकी विंडो चल रही है। अंतरिक्ष भाई, वो शायद से, ऑल्दो ये जूम का जमाना है, वीडियो कॉल का जमाना है, पर उसको अभी लोन नहीं भेजेंगे, क्योंकि ही हैज टू मैंडेटरी अटेंड द काउंसलिंग। नहीं,
I'm maybe thinking कि किसी और की विंडो खुली है, maybe वहां के रूल्स कुछ अलग हो, सी भी वही ना कि नहीं the it's मतलब all अटलांटा easy. के साथ बात हो रही थी उसके Okay. एजेंट की, पर इट्स कुछ क्लॉजेस हैं उसके वापस आने में, Hmm. जैसे हमारे लॉ में भी कहते हैं कि जब बेल मिलती है किसी को तो देर आर Yeah. सम थिंग्स दैट यू हैव टू कम टू कोर्ट एवरी दिस डे Yeah, ऑफ द right, मंथ right, या right, वगैरह right, कुछ। right. तो कुछ चीजें हैं कि ग्रीनवुड को, इसलिए मेरे को लगता है जनवरी में जा सकता है, नो डाउट जनवरी में जा सकता है वो, पर अभी लोन में भेजना थोड़ा सा टफ होगा, ऑल्दो नथिंग इज इम्पॉसिबल और उसके लिए Yeah, अच्छा होगा, पर that's what I was अभी saying. मेरे को Yeah. थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं। Yeah, yeah. The more realistic thing that I was seeing, but that then that'll be a huge bet कि मतलब एक साल और का इन्वेस्टमेंट उस पे ले रहे हैं कि like they actually what they do is ये decision आ जाएगा अपने due time में, all the things would happen, maybe he trained with the under 21s, the squad French players ये सब, then he might go out on loan in January और फिर वो पूरा चक्की घूम के एक साल और आ गया and that is when he ऑफ कोर्स might 12 मंथ्स तो आपको प्लेयर को देने ही पड़ेंगे, hmm, बीइंग आउट फिजिकली एंड मेंटली, yeah, द पर्सन हैज बीन अफेक्टेड अ लॉट, और उसने yeah, कुछ गलत किया है, उसकी उसने सजा भुगती है, yeah, और yeah. अभी शायद वो और भुगत सकता है, लेकिन अब तो क्लैरिटी It मिल गई कि doesn't नहीं really look भुगतेगा। that way. Yeah, yeah, yeah. हाँ, तो इट्स मैं ट्विटर में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ रहा था कि हमने वीडियो कुछ फैंस बोल रहे थे हमने वीडियो देखी है, हमने फोटोज देखी, हमने ऑडियो क्लिप सुने हैं। अगेन हम सोशल मीडिया के इस जमाने में अभी हम बहुत चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो Yeah. इस वजह से मेरे को लगता है कि वी हैव टू वेट। सबको पता है कहीं ना कहीं वो गिल्टी है, पर कितना एग्रेसिव नेचर है वो उस चीज का, वी शुड बी पेशेंट इनफ टू Of course, वेट see, फॉर दैट। law इतना वो black and white नहीं है, right? Like people on social media, especially, it ऐसा प्रतीत होता है कि it's like pretty black and white and stuff. And see, if you have an argument for that, कि ठीक है, that happened, but then the mind-boggling argument is कि भाई तुम कहाँ के चाचा चौधरी बन रहे हो, जब जो इंसान जिसने ये अक्यूज किया था वो और ग्रीनवुड आर बैक टुगेदर, प्रोबेबली फेक न्यूज थी क्या थी, दे डिड दे कम और नॉट, बट अपेरेंटली वो गेम देखने आ रहे थे या आए थे, आई डोंट नो, तो विद देयर बेबी, सो इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा? सो यू नो आई डोंट गेट द मैथ ऑफ दिस नहीं, इक्वेशन. you especially won't have a child, a normal person, I am saying that, or even the family won't allow to have a baby of a person who has abused their daughter. या या इट्स मतलब कुछ भी हुआ हो और हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, मारपीट हुई होगी, ये सब हुआ होगा, ये एविडेंस की उस पे वीडियो पे है, ऑडियो पे जो भी है, बट एक तरीके से मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर ये हुआ है, आई एम नो वन टू जज, मेरा कुछ वो नहीं है, पर मैं एज अ पर्सन आई वुड नेवर लेट माई डॉटर, लेट अलोन मैरी हिम, नॉट इवन हैव हिज बेबी, कि ये नहीं हो सकता, या ये ट्रॉमा है, ये दिस इज ट्रॉमा, दिस इज प्रॉपर ट्रॉमा। तो कहीं ना या कहीं हो सकता है कुछ चीजें जो अभी सामने ना हो, क्योंकि आप फिर शादी भी कर लिए, आपने केस भी ले लिया, आपने बच्चा भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा है जो हमें नहीं पता, पर बहुत कुछ है जो हमें पता है, उसके बेसिस में जो उस वक्त चीजें आई थी वो बुरी ही थी। obviously, and matlab again, I don't want to go into the nooks and details of it and stuff, but you know, matlab it's not again as if one की decision अभी नहीं बन रहा है, two, the fact that they're having a baby now, that means उनका सीन काफी पहले सेट हो गया है वापस से, तो like again, like फिर हम वही बीच के गधे नाच रहे हैं कि मतलब ये नहीं हो रहे वो नहीं है, because again there would be, see for sure, देखो anyone ऐसे ऐसे आंख पे पट्टी लगा के, इवन एज अ ह्यूमन आप बेबी को नहीं छोड़ोगे, बट आप उस बंदे के साथ दोबारा कभी नहीं आओगे, आप exactly, उस बंदे के साथ दोबारा कभी रिकंसाइल नहीं करोगे, आप आउट ऑफ yeah. ह्यूमैनिटी उस बेबी को रख लोगे, आप उसे वो कर लोगे, लेकिन यू विल नेवर एवर रिकंसाइल विद अ पर्सन हु हैज अब्यूज्ड। वो चाहे कितना पॉपुलर हो, वो चाहे कितना कमा रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, आपको अपना स्टैंड लेना है, तो आपके साथ गलत हो, वरना यू आर सेटिंग रॉन्ग एग्जांपल फॉर females around the world, that my Yeah. partner can do anything, if he's successful and rich I will forgive him and reconcile with him। ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूर कुछ ना कुछ चीजें, अगेन जरूर कुछ ना कुछ चीजें जो लाइमलाइट में अभी नहीं आई, एंड वी हैव टू वेट। एंड जैसे मेरे को
I will always stand कि Greenwood should never play for this club. But ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा बिलीफ है, और सबके You पास you अपना you बिलीफ you do stand for it कि he shouldn't play for this नहीं. club. विद द थिंग्स दैट हैव, एक जरा सी चीज भी ना काफी होती है दिखाने के लिए कि ह्यूमन, एज अ ह्यूमन वो कैसा बंदा है? कैसा है. मैं जज नहीं कर रहा ग्रीनवुड को, बहुत अच्छा प्लेयर वगैरह वो सब है, पर मेरी थिंकिंग ये है, मेरा बिलीफ ये है, और ये स्टार्टिंग से ही रहा है जब से मैंने ये स्ट्रीम करी है, जब से इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, दैट ग्रीनवुड शुड नेवर प्ले फॉर दिस क्लब अगेन. और फॉर मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी फुटबॉल से ही नहीं खेलना चाहिए उसको, जो हुआ है. बट मैं क्या सोचता हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कुछ करता हूँ नहीं फर्क, ये मेरी बिलीफ है. और दुनिया इससे बहुत आगे है. और मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम इतने मैच्योर है समझने के लिए, जब कोई एक कंपनी होती है, जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका कोई एसेट होता है, वो इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ेगी. Absolutely, absolutely, and fair enough. See, like Ojas Bhai says, he from day one, minute one till day O, day N, minute N is still having the same opinion. He did not ever think he should play, let alone for United, the sport in itself. तो मतलब बगीचे में भी खेलता हुआ दिख गया तो उसको उतारो, निकालो यहाँ से. But no, but I on the contrary never I पता नहीं मैं फुद्दू हूँ मैं क्या हूँ, whether it was my bias towards him, and then नहीं, also it's my being normal. It's being normal. It's being normal. the other side kicking in. I could never make my mindset कि ये खेलेगा ही नहीं, because it was again like हर चीज के ओजस भाई दो मेरे पास आर्गुमेंट्स आ रहे थे. वो खेलेगा क्योंकि कुछ प्रूव नहीं हुआ, वो गंदा वाला कि कुछ प्रूव नहीं हुआ. बट ऑब्वियसली द अदर साइड आई नो, अबे किसको बेवकूफ बना रहा है भाई, किसको बेवकूफ बना रहा है. सो देयर आर ऑलवेज टू आर्गुमेंट्स in either side of the head. ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये प्लेयर अभी यंग था, इसके जो जितने फॉलोअर्स हैं वो हार्डकोर ऐसे हैं कि ग्रीनवुड को एक चांस मिलना चाहिए. आई हैव Yeah, सपोर्टेड वेन रूनी सिंस आई हैव स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल. ठीक है, वेन रूनी मेरे लिए द बेस्ट प्लेयर, जब तक मेरे लाइफ टाइम में, मैं जिसको मैंने खेलते हुए देखा है, मेरे लिए बेस्ट प्लेयर है. मतलब मेरे को और पसंद है, बट मेरे एक होता है ना, एक फेवरेट है, सबका एक फेवरेट होता है, तो वेन रूनी है मेरे. yeah. पर अगर वेन रूनी कुछ ऐसा करता और वो बैन हो जाता है, कुछ हो जाता या ऐसे, पहली बात तो उसकी चीजें आने नहीं देते लाइट पे, ठीक है. बट अगर वो हो जाता तो पर्सनली मैं भी ये सोचता कि वो एक चांस डिजर्व करता है, क्योंकि मैं उस प्लेयर को पसंद करता हूँ, मेरे को वो प्लेयर पसंद है. तो जितने भी लोग ग्रीनवुड को पसंद करते हैं, उसकी नेगेटिव साइड को जानने के बावजूद भी यही बोलेंगे जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो प्लेयर आपको अच्छा लगता है. ग्रीनवुड मुझे अच्छा लगता है, बट इतना भी अच्छा नहीं लगता कि वो लॉ को मतलब जो भी उसने करा वो करे. तो इतनी अट्रैक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत यंग करियर था. बट रूनी एक ऐसा ट्रॉमा होता मेरे लिए लाइफ टाइम, शायद मैं फुटबॉल ही देखना छोड़ देता. यही ग्रीनवुड 10 years डाउन द लाइन ये करता, और सडनली एवरीवन इज वेयरिंग ग्रीनवुड जर्सी इन द स्टेडियम एंड सपोर्टिंग हिम एंड शाउटिंग हिम, एंड द न्यूज़ कम आउट कि उसने ऐसे करा, एविडेंस ऐसे आया, तो आई वुड हैव like quit watching football personally. मैं छोड़ देता. ट्रॉमा होता है ये पहले तो, ये ट्रॉमा सिर्फ ट्रॉमा इन सेंस इट्स हार्ट ब्रेकिंग जिसने भी ग्रीनवुड, तो तभी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ. ब्रेन टीजर्स का आई गेस थोड़ा सा टाइप हो गया, बट आई वी गेट व्हाट ही मींस. सो या वी डू, वही हम लोग कहते हैं फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ही वुड बी अ गुड एसेट टू द टीम. सो नहीं, वो ऐसे ही बोलना चाह रहा था. वाह, हाँ वैसे वी नेवर नो राइट नाउ कि यू नो व्हाट, वो जस्ट मैंने ये फर्स्ट टाइम न्यूज़ पढ़ी और मतलब मैं एकदम अभी मतलब इट आल्सो कॉट मी ऑफ गार्ड एकदम से. मेरा फर्स्ट चीज दिमाग में आया वो स्टीवन स्मिथ का इंसिडेंट, जब उसको कोहली ने फैंस को चुप कराया, चुप हो जाओ क्या कर रहे हो यार, जो उसको लोग, मैंने कहा यार इंग्लिश फैंस इंसिडेंट के बाद 100 गुना है इंग्लिश फैंस, मतलब वो तो 10 गाने बना देंगे भाई इसके. they'll make 10 songs of him, as to how he is whatever he has done and whatever the things that have followed in this case. I think they'll make 10 songs out of it. So that is the thing I was afraid of, because he goes, suppose he goes away to City, he goes away to Arsenal, and then we're like, Greenwood तू तो चोर है, ये सब उसका चलता रहेगा, and that'll be a problem for us. But let's see, man, let us witness and see whatever's going to happen.
Otis Wise dropped off due to some issue here and there, but that's no big deal. I think he'll be back, or we'll round up before it. But yeah, anyways, so yeah, as I was saying, I'm afraid about that. See, one, through with this statement, I think we all can agree in unison. It's not 100% done, but it's like Fabrizio के world में, it's like here we go लगा लो आप इसका, as to Greenwood is back. सबसे पहली बात ये. दूसरी बात, there's a slim chance of this happening, but if it gets properly announced in the next 3-4 days, would he, as Ojasbai says, according to him, as he's read somewhere, कि कुछ clauses हैं. There are some clauses which are prohibiting from him to come in right and jump right into the mix. So that's that. That is one side of the things. So if he does still jump back and कोई clause वगैरह जो भी कुछ skip हो गया कुछ हो गया, if he does jump back into it, maybe उसकी counseling हो गई or whatever is going on behind the back. So there's a slim chance that he could go out on loan and then January maybe. But the realistic thing which I think would happen is him, the thing coming out. Maybe even in like 2, 3, 4, 5, 6 days, 7 days, एक हफ्ते में maybe चीज आ जाए, and then पता नहीं कोई विंडो वगैरह खुली हो या कुछ क्लॉज हो जाए जिसकी वजह से वो maybe चला जाए लोन पे, or does he still train with the team, and then he goes out to loan out on loan in January, and then he comes back and stuff. So that's the second question. And the third degree is, would Greenwood be the same? Because हमें Greenwood, to be honest, वो इतना अच्छा player है, but हमें Greenwood नाम से तो कुछ नहीं है ना. It's about his finishing, it's about his goals, it's about his star boy qualities, it's about him getting nominated in the Golden Boy for FIFA. So it's all of that. It's all of that rolled into one fantabulous, superb player with Old Trafford ka ceiling as his potential. I think that is what we are buying into, and I can see what's his way back. So just before rounding up, we'll ask for some of his views. So yeah, आप drop off हो गए थे, but anyways, I was just about to end it, and as I was saying, any last thoughts, भाई? लास्ट थॉट्स यही है कि वी हैव टू जस्ट वेट कि क्या हो रहा है सिचुएशन के साथ. द प्लेयर इज हैज ऑलरेडी बीन, ये न्यूज़ है, हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड द डिसीजन, सो द एजेंट्स आर सॉर्टिंग आउट द फाइनल थिंग्स. और जो हमारे सीईओ हैं, ये सब प्लेयर्स है अलोंग, ऐसा बोला जा रहा है कि मैनेजर की से नहीं ले रही, बट ईटीएच वाज अराउंड द डिस्कशंस दैट इन्वॉल्व ग्रीनवुड. Not in a heavy manner, but what are his point of views? And there are sources claiming that Eric Ten Hag said that the guy has potential and he deserves a second chance, but he will not force the board. He will not ask the board out. He will not go out of the way to bring him back. It will always be on the final call of the board of directors and whoever is leading this club. But कहीं ना कहीं ETH ने ये बोल दिया है कि he the player has a potential and he needs it. तो most probably I'm thinking कि decision is very soon and he will resume playing football. But we have to wait कि हमारे लिए कब खेलेगा भी या नहीं खेलेगा, और अगर अब जब खेलेगा तो कहाँ खेलेगा. Yeah, matlab, I think, again, the way we looked at this Greenwood case, we did not take things as they were. Same ETH की भाषा, body language, उसमें भी देखो, I think he's been asked from the first interview, to be honest, till this date, 5-6 times. And managers usually, जब भी कोई board वाली चीज होती है, be it even transfers or stuff, या ownership change, transfers, सीधा वो कह देते हैं next question, we're not here to discuss that stuff. He every time इसका एक consistent answer था, I am pretty happy with his potential. मेरे को लड़का बहुत भाता है. अब उसके ऊपर है कि वो कैसे क्या रहेगा. अगर वो innocent है तो he's मतलब फूलों की माला लेके तैयार हूँ. He always held that opinion. And he was pretty vocal about it. It wasn't कि irrespective. Obviously, can't say that. But यही छोटे-छोटे signs होते हैं that usually say, because had the decision or the vibe inside the club been कि ना ये तो गया, so it would have obviously been shutting it down. But he always remained open to it. So yeah, that does communicate a lot. So yeah, but एक और चीज याद आ गई just before we now round it up, यार 60-70 million reject कर दिए हमने Maguire और McTominay के लिए combined. एक दो लाइन सुना दो उस पे. नहीं, मैगवायर की बिड एक्सेप्ट हो गई थी 30 मिलियन की. क्लब्स हैड अग्रीड, एंड जो उसका 7 to 8 मिलियन बोनस था, उसमें से 1.5-2 मिलियन एग्जिट बोनस दे रही थी यूनाइटेड, एंड 1.5-2 मिलियन वेस्ट हैम साइनिंग बोनस दे रही थी. बट मैगवायर वाज कीन कि मेरे को प्रॉपर पे आउट दिया जाए इस क्लब से निकलने के लिए. इतनी गाली जायज है उसके लिए, मतलब अगेन नहीं, एक साइड ग्रीनवुड है ओजस भाई इसी केस में.
एक side there is this guy who has been our captain last season. Like it's not even as if लोग कह रहे हो he's a mercenary, would he rather rot on the bench? अरे भाई 6 महीने हुए उसे bench पे मुश्किल से. That too he's been coming off and he's playing a pivotal role after the 75th minute काफी games में. He has just been stripped of the captaincy. It's been not even 20 days. So he's not really a mercenary abhi. So again, नहीं, this shows the bias wala side, right? it is like जब मैं कहीं काम कर रहा हूँ और लोग मेरे से कहे कि तुम इस पोजीशन में क्यों काम कर रहे हो, क्योंकि मेरे को सैलरी मिल रही है, क्योंकि मैं पैसे का हकदार हूँ, और अगर मैं जाऊंगा तो मैं पे आउट लेके जाऊंगा. Having money is a right of everyone. No one can ज्ञान पे लो on this. आप you cannot judge a person claiming his salary, whatever he is due. He is due for a bonus this year because the team has qualified for Champions League. तो just I don't think so कि मैगवायर को इतनी गाली नहीं बनती यार, मतलब नहीं, जितना इतना नहीं बनती, but let him rot, under 21s, fringe players, come on. आप वरान को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हो कंटिन्यूअस खेलने के लिए. वही आपके पास ऑप्शंस कम है. ठीक है, पवार्ड के साथ डील ऑलमोस्ट अग्रीड हो चुकी है पर्सनल टर्म्स में. व्हाट बायर्न इज आस्किंग फॉर 40 million, 35 plus add-ons. But United are keen on 25 plus 5. That is a final offer from Manchester United जो प्लान हो रहा है. पर मैगवायर का जाना जरूरी था, और अगर मैगवायर को आप पैसे दे दोगे वो चला जाएगा, वो नहीं रुकने वाला. क्योंकि यार 30 का बंदा, उसे कहाँ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कहाँ मिलेगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट. वेस्ट हैम में रहेगा, फिर कोई मीडियोकर क्लब्स में चला जाएगा. He won't be earning this money. He deserves this because he has been the captain of Manchester United, which he didn't ask to be. Exactly. He was made captain of Manchester United. He doesn't deserve this disrespect. I hate that player. I don't. Same. Absolutely same. Yeah, I don't like that player. But it's something. क्या सही क्या है? We have to grow up and realize कि सही क्या है. और सही ये है कि मैगवायर बोनस डिजर्व करता है, क्योंकि उसके contributions थे मैनचेस्टर यूनाइटेड को टॉप 4 में लाने के लिए. Absolutely. ठीक है. That is why look at the example of Casemiro जो हमारे सामने obviously, and every other player 30 की उम्र टच करते ही प्लेयर्स का मतलब एकदम से दिमाग में बत्ती जल जाता है कि आई वांट वन लास्ट बम्पर कॉन्ट्रैक्ट. एक मेरा बम्पर कॉन्ट्रैक्ट बचा है 32-33 के बाद मुझे कोई. हैरी केन आल्सो एग्जैक्टली घंटा औकात नहीं देगा. 500k per week. Exactly. अब obviously Casemiro है, they are different level players, and obviously 30 साल के ये भी होंगे जो 50 के भी नहीं ले रहे. बेस्ट हो गया. Casemiro is the best CDM in the world. But it's like he's at United. तो कुछ भी कहो तुम, he has made his way throughout the clubs, Sheffield, Hull City, Leicester, और यहाँ पे आया है. Whatever you say about him, he's a player who's made that journey. अब वो United पे है. वो 30 के बाद क्यों पैसा छोड़े? When will he ever get he gets 100-ish at West Ham. What the fuck happens to him after when he's 33? कौन उसको 33 में 150 देगा? He'll only go down from here. Yes. He'll only go he down won't be earning. I think Maguire deserves. Al Hilal Atiyad आ जाए यार. दे दो यार 35 कुछ दे दो, 25 30 35 दे दो. ले जाओ एक आधी नेम का एक कमरा दे दो इसको यार. Even Saudi know that he is jack shit. ना वही साउदी लोग कुछ खतरनाक माल. Americ Laporte bro. Laporte, Bonu. The fuck's happening there? But Southgate का कोई कमेंट है जो ये इंग्लिश नेशनल टीम से काफी न्यूज आ रही है. Irrespective of what is happening around Maguire, Maguire is considered irreplaceable. He'll play, and he should. He's pivotal to everything Southgate does with that English team. Because Tomori is one of the best centre backs in Serie A, but he was really not performing at that level in the international stage. तो आपके पास एक प्लेयर है जो इंटरनेशनल स्टेज में परफॉर्म करके दे रहा है. एक मुझे एक प्लेयर और याद आता है अर्जेंटीना का. ऐसे एक दो प्लेयर्स हैं. लावेजी था एक राइट विंगर अर्जेंटीना पे. एजिक्वेल लावेजी. हाँ, तो ही वाज आई थिंक क्लब लेवल में वो काफी वो था. तो मतलब बट फॉर नेशनल टीम ही यूज्ड टू टर्न अप. मतलब ये जब मेसी वैसी स्टार्ट हुई थी तो इट्स समथिंग. मैगवायर चाहे कुछ भी हो, पॉग्बा को देख लो यार. शिट फॉर यूनाइटेड, बेस्ट फॉर फ्रांस. And just why it also makes sense, even at West Ham it's simple. back 5, back 3, back 4, Southgate पीछे. And even right now I'd say अगर तुम पीछे दब के खेलोगे, उसका 2.5 किलो का 3 किलो का सर
is irreplaceable in that kind of football. He is one of the यस, best at मतलब doing that. ये है कि मैगवायर फिलहाल तो डील ऑफ है. मैगवायर Yeah, इज yeah. डील ऑफ कंप्लीटली, एंड मैगवायर फॉर नाउ इज गोइंग टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. And और so वरान, is McTominay, right? या मैकटोमिने, मैकटोमिने का सीन दूसरा था. मैकटोमिने के लिए Yeah, yeah. 45 मांगे थे यूनाइटेड ने, पता 45 नहीं, मांगे थे. मुझे नहीं पता नहीं. We अगर had the वेस्ट हैम discussion on the group 45 as दे well. देती तो दे वुड हैव बीन अ बिगर जोक, बट 45 वाज टू मच. फॉर 35 शुड हैव बीन डन. 65 फॉर बोथ द प्लेयर्स शुड बी इनफ, पर नहीं करा. In Saudi law, the entry is prohibited for anyone. So, मगवायर पे कौन सा ग्रीस वाला कह रहे हैं क्या? नहीं, वो ये कह रहा है, मैगवायर ने लड़की को पंच करा था. वही मेरे को नहीं तो ना, नहीं लगता. पुलिस ऑफिसर को करा था ना. पुलिस ऑफिसर फीमेल थी क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो. एंड गर्ल तो नहीं होगी, वुमन होगी ये फिर. ग्रीनवुड की बात कर रहा होगा. हाँ, मे बी ग्रीनवुड की पारितोष बात ने कर भी रहा हूँ. बट पारितोष भाई पारितोष ने भी आस्क्स पंच कि मारा. which club, so what do you think, अगर सपोज हो गया अटलांटा के साथ डील एग्रीड है. बट वैसे आप सोचो, आप who would you prefer the Serie A आई for वुड प्रेफर अ स्पेनिश टीम फॉर मी. Spanish team? मतलब वो टैक्टिकल रीजन से. हाँ, मतलब मेरे को ये लगता है कि जितना जो बेटर ड्रिल्स ला लीगा में होती है गेम को लेके, मतलब दे आर सो गुड एट द फुटबॉल, चाहे पास मीडियोकर हो, करना सीख जाएगा ढंग से. हाँ हाँ, yeah. नहीं, बट द ड्रिलिंग, द फुटबॉल ड्रिल्स Yeah. आर वेरी गुड एट. I मैं think तो Rashford को भी एक सीजन वहां भेजो यार. Rashford को भी एक सीजन वहां Rashford is stuck forever here. So Yeah. मतलब वो तो है, but again McTominay and Maguire 65 should have been enough. McTominay में ये दिक्कत हुई कि they were 10 million short, और Maguire में ये दिक्कत हुई कि personal terms agree नहीं हो रही. Both the deals have stalled and right now not progressing in any way. तो Maguire, इसलिए ग्रीनवुड से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड Maguire में है. That's interesting. नहीं, मैगवायर को चांस इसलिए मिलेगा कामिल भाई क्योंकि मैगवायर, वरान हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंजरीज, और Exactly. लिंडलॉफ इज लाइक, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बट ही अगेन कम्स इनटू दैट मीडियोकर काइंड ऑफ प्लेयर, लिंडलॉफ. And मैगवायर और लिंडलॉफ विल even, but he should think about his future. That's what Ojas bhai and we were speaking कि उसका English team में होना almost तय है. Like at least he'll get this call up, and if he plays fantabulously well, which I think he would because he always does in England, there's no sort of scene कि वो Gareth Southgate उसे drop करेगा. काफी लोग कॉलविल को कह रहे हैं. कॉलविल से मैं आपको पहले बता दूं, उससे पहले टमोरी है लाइन पे, टोमोरी, जो फिकायो टोमोरी है. कॉलविल तो है ही बहुत अच्छा प्लेयर, बट टोमोरी, लॉट ऑफ प्लेयर्स आर इन द लाइन फॉर दैट सेंटर बैक पोजीशन. एंड नॉट टू फॉरगेट ल्यूक शॉ इज आल्सो देयर. ल्यूक शॉ इज अ वेरी वर्सेटाइल डिफेंडर. मतलब वो इतना अंडररेटेड प्लेयर मैंने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा. उसका कोई बात भी नहीं करता कोई उसके बारे में. ल्यूक शॉ इज सेंसेशनल. बारसा रियल जाएगा. रैशफोर्ड को जाना होता तो वो इसी साल निकल जाता. पारितोष भाई, पीएसजी वर प्लानिंग रामोस से पहले, गोंकालो रामोस से पहले. पीएसजी एक साल से ट्राई कर रही है और उनपे 100 मिलियन बिड रेडी भी थी, पर रैशफोर्ड को नहीं जाना. हाँ, of course, like Rashford तो Rashford है. But I again think, seeing how the football world is moving and Mount तक निकल गया and stuff. But that's what I was saying कि अगर if he has a couple of seasons like this, the way he had this one, and we are again as mediocre, we don't win much, then maybe हो जाएगा 27-28. Maybe he could look towards maybe, but golden I think बहुत मुश्किल है. अब इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट से टाई अप हो गया. पैसा तो काफी लगेगा उसको निकालने जाएगा. तो देखो वो आइदर वे में उसका आज तो हमने देख लिया. अब एक साल वाला सीन भी रिस्पेक्ट नहीं होता फुटबॉल में. अब वो वाला वैल्यूएशन वाला सीन भी हैजार्ड और ऐसी डील्स ने उड़ा दिया है. तो आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ, हैजार्ड से स्टार्ट होते हुए हैरी केन नाउ. सो आई थिंक द ओनली थिंग वुड बी कि उसका 150 तो पक्का ही है. 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा रहा तो वो 200 हो जाएगा. मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ in the range of this and how we are moving, how fast this valuation stuff is moving. एक बंदे का मैंने देखा था काकी, एक बंदा था. So he basically asked what do you think is the worst transfer ever. तो उसने कहा ऐसे तो दिमाग में बहुत सारे आते हैं, पर एक जिस पे मुझे पर्सनली गुस्सा आता है, and he seemed old, कहता पूरा फुटबॉल बिगाड़ दिया इस नेमार. जीता कुछ नहीं, किया घंटा कुछ नहीं, मार्केट और बिगाड़ दिया.
and I नहीं, support a mediocre club और काफी हम कोई लोग नहीं नेमार खरीदता. को गाली दे रहे हैं, काफी लोग नेमार को गाली दे रहे हैं. उस वक्त हुआ क्या था, पीएसजी केम विद एन ऑफर टू बार्सिलोना टू बाय नेमार, एंड Yeah, नेमार दे रिजेक्टेड द बिड आउटराइट. और नेमार के पास एक एग्जिट क्लॉज था जो 200 मिलियन का था, वो भी बारसा ने रिजेक्ट कर दिया. नेमार ने yeah. खुद जाके अपना एग्जिट क्लॉज पे किया था. ये बहुत बड़ी न्यूज है उस टाइम की, और काफी लोगों को ये चीजें पता नहीं है. पीएसजी वर ऑन द फ्रंट टू बाय नेमार, एंड बट बारसा नेवर वांटेड टू सेल. और वही. जहां तक मेरे को लगता है नेमार ने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी अपने. हाँ, right, yeah, exactly. But वही मतलब I तो was for one not expecting now for him to move to Saudi Arabia भाई. मतलब the नहीं perks are ठीक है, insane. मतलब इतना पैसा मिलेगा, यू हैव वही वही अचीव्ड वही मैंने एवरीथिंग इन सोचा, फुटबॉल. मतलब the level यार, the achieve level. he was never a Brazilian for me, क्योंकि Brazilian never, you know, he हाँ, Brazilian never European gave. Brazilian. हाँ, we say this. Yeah, Yeah, बट yeah, yeah, बिकॉज yeah. बैलन डोर का चांस है, बट उसे पता था उसकी इंजरीज की दिक्कत की वजह से True, ही true, would never true, be true, true. consistent enough to compete with Haaland and Mbappe. So Yeah, ये he आपने was सही done. बोला. He wasn't really a Brazilian. You know the Indian context में ऐसा बोलते ना, हाँ, ये मद्रासी जाट है, ये you know people from Tamil Nadu who have that swagger and stuff. But no. In the Indian context funny था. He wasn't really a Brazilian. You're right. वो European influence बहुत सही उसमें dominantly दिखता था. And he was always one of the, you know, the starlight was Joga Bonito. नहीं उसकी मतलब skills जो में था. मनी मिल रहा है, जो Yeah. पैसे वहां मिल रहे हैं, he has done good. वो जिस भाई रोलेक्स, वो देख रहा हूँ मैं भाई, वो देख, he was like bro shit Fabinho man, like people were like we can't compete with this shit, we just can't now. And the thing is I think they will stop giving this money now. इनका ये था, इन्हें एक पूल बनाना था, इनका 50-55 प्लेयर का जो पूल बन जाएगा सक्सेसफुली, फिर किस बात का पैसा देंगे ये, then they'll नहीं, directly पैसा invest it ये into. तब तक देते रहेंगे जब तक ये पैसे एक लीग नहीं बना लेते. हाँ, exactly. ऐसे कि इट्स हाईली वॉच्ड एवरीवेयर. अभी देखो भाई, एक लीग का लेवल चेक करना है ना, उसकी इंडिया की व्यूअरशिप देख लो, चाहे Yeah. कोई भी लीग हो इस वर्ल्ड में. ठीक है, एशिया में व्यूअरशिप देख लो, आपको पता चल जाएगा टीम क्या, लीग कैसे परफॉर्म करी. प्रीमियर लीग के लिए लोग पागल हैं इस देश में, पागल. सोनी ने पिछले साल रोनाल्डो के जाते ही दैट ओवरटोक द सऊदी अरेबियन लीग, एंड उनका वो स्टोंक्स वाला मीम हो गया होगा अब तो पूरा, मतलब they'll be मतलब rolling ठीक over. है, बहुत टफ है, पर आई थिंक दे आर गोइंग इन द राइट ट्रैक विद बाइंग द राइट प्लेयर्स. नेवेस, ओजस भाई अब क्या टफ यार, उनका तो मतलब हो गया, they've just fucking conquered नहीं, everything. जरूरी नहीं है कि आप सारे प्लेयर्स लाओ. तो यू हैव टू बी मेक इट कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव. आपको फुटबॉल वैसे करना पड़ेगा, तो बट उसके वो लिए उसी से मैनेजर्स भी होगा, लाने, don't you think? मतलब मैनेजर्स आ रहे मैनेजर्स हैं. भी आना जरूरी है. वो मैनेजर्स भी आना जरूरी है, एक पूरा सेटअप बनना जरूरी है, तभी ये लीग आगे जाएगी. बट बहुत बहुत लंबे रास्ते कटने हैं. अभी देखते हैं क्या होता है. वही मतलब at least today when I saw Bonu now, and you know Fabrizio was saying that he'll be focused on the final, which I think is the UEFA Super Cup, I think, which he's speaking, and uske baad he'll leave for 21. And I was like, bhai ek aur, and now Laporte going to Al Nassr, like what's happening? Mane, Laporte, Ronaldo ek team mein, it's insane. And matlab Saudi Arabian league, I don't know whether it will be like Qatar कि World Cup तक ही रखना है, or would they be wanting to, you know, because obviously 2-3 साल में Ronaldo is gone, Benzema is gone, Kante is gone, some of the older players that have joined up have gone. Then what is the thing which is you know, going to keep them? Maybe Neymars of this world. I don't know man. मेरे को बस ये डर लग रहा है कि अब आपका विनीशियस वगैरह ना भाग जाए 25-26 की उम्र में, तब क्या होगा? तब फिर हमें स्विच करना पड़ेगा अपना वॉचिंग वगैरह, और क्या, रैशफोर्ड भाग गए तो फिर अलग सीन हो जाएगा. नहीं, बट आई विल नेवर स्टॉप वाचिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. वो तो है ही, मैं कह रहा हूँ एज अ होल यूनाइटेड कौन देखना मतलब बंद करेगा यार. मिडफील्डर्स ने प्रीमियर लीग एज अ होल मैं कभी बंद तुम नहीं ल्यूटन करूंगा. टाउन भर दो भाई रेड शर्ट में, हम तब भी देखेंगे, वो तो कोई चिंता नहीं है. दैट्स नेवर गोना बी द सीन. बट कैन वी या, गेट, यस वी आर ऑलरेडी डन द डील विद अमराबाद. एक तो हो गया, दूसरा अभी नहीं होगा, दूसरा जनवरी. Amrabat, do you think it's done?
यस इट्स डन। वो बस डॉनी का चीजें सॉर्ट आउट करनी है। आम्राबाट इज डन। ओनाना का इंटरेस्ट दिखाया है एक ऑप्शन रखने के लिए, बट एवर्टन आर आस्किंग फॉर 60 एंड ही इज नॉट वर्थ दैट मच। 60 भाई 60 यार, मतलब मजाक बना मतलब दिया 60। यस सो इट्स डन। या मैन, मतलब कैन वी साइन 1 2 मिडफील्डर्स भाई, as Ojis भाई said। एक अमराबाद आ जाए। मैंने एक दो वीडियोस किया, मैं उसमें कह रहा था कि अमराबाद ही विल क्रूज कैसेमीरो मॉड्रिच रोल्ड इनटू वन इन द वर्ल्ड कप। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने इटालियन लीग नहीं, नहीं फॉलो वर्ल्ड किया, कप बट में मैंने काफी सुना नहीं प्लेयर्स उसका। परफॉर्म करते हैं, वर्ल्ड कप में मैंने वही काफी कहा कि प्लेयर्स। उसके बाद मैंने सुना नहीं उसका इतना, सो हाँ, व्हाट्स दैट क्योंकि वर्ल्ड कप एक स्टेज होता है। वर्ल्ड कप, इफ आई एम बीइंग अ अनफिट पर्सन इज will wear an Indian jersey and go and represent India, it's a very big thing for me. I will give my best. I will play because it's a stage. Stage is set for players, and तभी मैं बता रहा हूँ कि फ्लोरेंटीना को पता है वो क्या वैल्यूएशन है, एंड दे आर नॉट आस्किंग मोर देन 25 मिलियन फॉर हिम बिकॉज दे नो व्हाट प्लेयर इज एक्चुअली वर्थ। अब वो प्लेयर आपके लिए जो वर्थ हो तो हो, पर यूनाइटेड के लिए कितना वर्थ होगा वो इम्पोर्टेंट है। स्पोर्टिंग के लिए ब्रूनो वाज वर्थ 50, फॉर अस ही इज 500, फॉर अस ही इज आई डोंट ट्रू नो ट्रू ट्रू 150। ट्रू ट्रू। ये टर्म मैंने सबसे पहले जैक ग्रीलिश के ऊपर सुना था, and they were saying कि he's not 100 million का, but for Aston Villa he was worth maybe even more than 100 at that time, so yeah, that's pretty correct। एक तो ये साला वाली डीपी वाले भाई, एक बार आप कंफर्म कर दो आप बोल किस बारे में रहे हो, बिकॉज वी हैव नॉट सेड कि ग्रीनवुड इज गोना गो टू सऊदी अरेबिया। तो एक बार ये बता दो आपकी, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो who are you really talking about, to let us know what's the context of this। he also says कि Amrabat, the problem, he did not play with United for 1 month because he had to play with his country। ठीक है, पॉगबा African Cup of Nations कह रहे गए। I think maybe you're talking about the AFCON. If not, do correct me. But if that's the case, I think him coming here, we will manage. If he doesn't come here, then we have to manage without him. पूरे समय के लिए. If he does come here, it's only going to be a month. So I think you choose what's better for that. So, as I was just saying, yeah, man, there was a lot of interaction going on, and I think people are still interested in that Maguire shout and in that Maguire nahi ja raha wala scene, even more than Greenwood right now. So that's I don't know if we can call it surprising, but yeah. So I think we can call it quits for today. So bye bye बोल देते हैं ओजस भाई, you're back again। चलो ओजस भाई की तरफ से bye bye, and thank you so much to everyone for interacting। It was lovely having this discussion, and yeah, we've done the comments here, yeah। So it was lovely having this discussion with all of you। Unexpected nahi tha, but again, it was a surprise for us to receive that Greenwood notification। And what was a bigger surprise for me was कि उनने एक धक्का दिया एक result की तरफ, and result अभी नहीं दिया। So we're going to see what happens next। But again, a big thank you। Don't forget to like this video, subscribe to the goddamn channel, and turn the notifications on। And anything like this happens at United, we're ready to stream। Moses भाई कूदेंगे, अपन कूदेगा, and we'll discuss the shit out of it पूरा। And again, a big thank you to everyone who interacted in the chat. Kamil bhai, Sala bhai, Paritosh bhai, Brain, James, Kushagar bhai, Manish bhai, thank you so much. And a good night to you. Keep supporting United. We'll be back with a lot of action, which is against Spurs in the preview and talks about that. Maguire ke baare mein maybe. So we'll be back. We'll be back. And again, a big thank you. Keep supporting United. GGMU. Take care. Good night.